Hello everyone, my name is Mrigesh Patni and this is the 7th video in the series of Linux operating system tutorials. In this video, we will learn about some basic and intermediate Linux operating system commands. So let's get started. In this course, we will be using Bash shell to run our commands. Now Bash shell is among many other shells in the Linux operating system. And if you ever see /bin/sh, that normally means that it is a link to Bash on Linux operating system. You will also hear Bash or shell scripts many times in this course. Now, shell scripts are a sequence of shell commands. It is similar to the bat files .bat or batch files in DOS-based systems. Now let's jump right into a terminal and see our commands in action. So our first command is cat command. So cat simply outputs the contents of one or more files. If you do cat file1, the contents of file1 will print out. Now cat comes from concatenation, that means adding up. So when you do cat file1 file2, it prints the contents of both the files and it will give the output to the output stream. It will write the data to the output stream. So if I do cat file1 and file2, see, both the contents are printed to the output stream. Now you must ask me, what is an output stream? So think of input output streams as channels or pathways that allow data to flow into the process and out of a process. Now Unix processes use input output stream to read and write data. It is also called standard input and output. So if a process wants to read data, it will read from input stream. If a process wants to write data, it will write to the output stream. The sources of input stream can be multiple. It can be a file, it can be a device, it can be a terminal, right? So to see this in action, we will take the help of cat command. We have just now learned the cat command. So if we type just cat and we don't give any file name, we don't give any input to it, we will not get our shell prompt back because cat is still running. The reason cat has adopted interactive behavior has to do with the streams because you didn't specify file name. Cat is reading from the standard input stream. In this case, it will be reading from the terminal. So if I give anything here, hello, the hello will print out. So this hello that is printed is written to the output stream, that is terminal itself. This hello that we gave input here is an input stream, in this case terminal only. If we want to close this, we will have to enter control plus D. We'll get our prompt back. There is a third standard IO stream that is called standard error. We will read about it later in this course. Now let us jump into another commands. Our next command is ls. So ls lists the contents of directory. The default is current directory. So if we simply do ls, it will list the contents of current directory. So if we do ls here, we will see file1, file2 and hero. If we do ls hero is a folder. If we do ls hero, we will see the contents of hero folder. It is file3. Now if we do ls-l, we will see a long list of details about the files and directories. We can see the permissions, we can see user and group, we can see the date modified. If we do ls-f, it will display the file type information. Our next command is cp. So cp command files को copy करती है. अगर हम cp file1 file2 करेंगे तो file1 के contents file2 में copy हो जाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि आप multiple files को एक directory में copy करना चाहते हैं, then you will do cp file1 file2 file n and so on and the name of the directory. अगर हम example लें, तो अगर हम चाहते हैं कि file1 को हम file2 में copy करें, तो उसके लिए हम पहले file1 के contents देख लेते हैं कि file1 के अंदर है क्या. तो file1 को cat करेंगे, तो यहाँ पे है hi I am Mrigesh. अगर हम file2 को cat करेंगे, तो यहाँ पे है please subscribe to my channel. Now if we do cp file1 file2,
एंड नाउ वी डू cat file2, तो हमारे file2 के कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। जहां ये पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल था, अब ये हाई आई एम रिगेश हो चुका है। Our next command is mv command. So mv का मतलब मूव होता है, तो इट मूव्स फाइल्स। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आप किसी फाइल को रिनेम करना चाहते हैं तो आप मूव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम फाइल 1 का नाम ए देना चाहते हैं, लेट अस से, देन वी विल डू mv file1 AA। नाउ हमारी जो फाइल 1 है उसका नाम चेंज होके AA हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल्स को किसी डायरेक्टरी में मूव करें, देन वी विल डू mv, हमारी फाइल्स यहाँ पे AA एंड file2, तो हमारी फाइल्स दूसरी डायरेक्टरी में मूव हो जाएंगी, जो कि इस केस में हीरो है। Our next command is touch command. So touch creates a file. अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, then we will use touch. If file already exists, then touch will not change it, but it will update the modification timestamp. अगर आप ls-l करके देखेंगे तो आपको उसका timestamp change होता हुआ दिख जाएगा। Now let us create a file with touch. We'll do touch abc and यहाँ पे हमारी abc फाइल क्रिएट हो चुकी है। Our next command is rm command. So rm removes the file. If we do rm abc, then our abc file will be removed. And if we do ls, we can see that our file is removed. Our next command is echo. So echo किसी भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको प्रिंट कर देता है टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। So if we do echo hello world, we will see hello world on the screen. So it is printing the output to the output stream, that is terminal in this case. Now we will learn to work with directories, but first we must understand what is a absolute path and what is a relative path. तो कोई भी पाथ अगर स्लैश के साथ स्टार्ट होता है देन इट इज़ अ एब्सोल्यूट पाथ, या फिर उसको हम फुल पाथ भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी लाइनक्स डायरेक्टरीज की हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पे हमारा रूट होता है, यानी कि स्लैश होता है। तो कोई भी पाथ अगर हम कॉल करते हैं तो उसको वो स्टार्ट रूट से ही होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर वो रूट से स्टार्ट ना हो, यानी कि हम रिलेटिवली उसको कॉल करना चाहते हैं, देन वी विल नॉट स्टार्ट इट विद स्लैश। वी विल सी डायरेक्टरी हायरार्की इन लेटर वीडियोस। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज cd. सो cd चेंजेस द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी कोई भी ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें यूज़र करंटली है। अगर आप चाहते हैं कि अभी जिस आप डायरेक्टरी में हैं उसको आप दूसरे फोल्डर में जाना चाहते हैं, अगर आप हीरो में जाना चाहते हैं, देन यू विल डू cd hero and you will go into hero. अगर आप जस्ट cd करते हैं और कोई फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं करते तो आप अपने होम फोल्डर में चले जाएंगे। Now our next command is mkdir. Mkdir creates a new directory. Mkdir means make directory. Now if we do mkdir hero2, our hero2 will be created. Our next command is rmdir. Rmdir removes a directory. It removes a directory, not a file. Okay. Now, if a directory is not empty, this command will fail. अगर हम rmdir hero2 करें तो हमारी hero2 फोल्डर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं rmdir hero करें तो इट विल थ्रो एन एरर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो hero1 डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा फोल्डर सारी फाइल्स के साथ hero1 को पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दें तो हमें rm-r hero लिखना पड़ेगा। इसमें जो -r है दैट स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव। तो रिकर्सिवली हमारी फोल्डर से सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारा हीरो फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा।